I hope I am audible to you. 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 Good evening to all. Good evening to all. I hope I am audible to you. Good evening to all. I hope I am audible to you. Good evening to all. I hope I am audible to you. Good evening to all. I hope I am audible to you. So today we are going to discuss about the antiviral drugs. Yesterday also we have seen the classification and some important part, but again I would like to revise it, and after that we will see drugs used in the treatment of HIV/AIDS. Right. So first of all, we'll revise drugs known as the antiviral drugs or drugs used in the treatment of viral infections. In the pharmacology, we are discussing the antibacterial drugs. From antibacterial drugs, we have completed a lot of things like your beta-lactam antibiotics, ammonium glycoside, tetracyclines, chloramphenicol, macrolides, then sulfur drugs, then chloroquinones. We have also seen the antifungals. We have also seen the antalmetic drugs yesterday. So today we'll discuss about the antiviral drugs. So antiviral drugs मतलब क्या है? ये drugs used in the treatment of viral infection or drug is used in the treatment of virus or viral infection. तो virus क्या होता है? Virus is an intracellular parasite. तो virus is an intracellular, सेल के अंदर रहता है. Virus is an intracellular parasite. Remember, virus is an intracellular parasite and it totally depends on the host cell for the growth, food and multiplication. तो आपके सेल में इन्फेक्शन होने के बाद में वायरस पूरा आपके सेल का ही अमीनो एसिड, सेल का ही मतलब सेल का ही कार्बोहाइड्रेट्स, अमीनो एसिड यूटिलाइज करके ग्रो करेगा. आपके सेल की ही एंजाइम्स, आपके सेल की मशीनरी यूटिलाइज करके ग्रो करेगा. तो इट डिपेंड्स ऑन द होस्ट सेल फॉर फूड ग्रोथ एंड मल्टीप्लिकेशन. Different steps involved in the viral multiplication in the host cell. We'll see. First of all, virus will attach to a host cell, known as attachment of virus to host cell membrane. Attachment of virus to the host cell membrane. Second step पता है penetration of virus in the cell. Third, release of genetic material, release and uncoating of viral DNA RNA, that is genetic material, and then it will start replicating the DNA. Okay. After that, synthesis of viral component like early proteins and late proteins. Then there is assembling of viral proteins for the structure for the viral particles, and then release of mature virus particle. Release of matured virus particle from the host cell to infect another cell. Okay, right? So you can see over here. So this is your human cell. ये आपका सेल है. This is the human cell, right? And this is a virus. So virus will attach to a cell. After attachment, it will go inside the cell known as penetration. After penetration, there is uncoating. इसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो खुद को अनकोट करेगा सेल मेम्ब्रेन को, बाद में जेनेटिक मटेरियल रिलीज करेगा. जेनेटिक मटेरियल रिलीज करा डीएनए आरएनए. तो देयर आर टू टाइप ऑफ वायरसेस. डीएनए वायरस हो सकता है या फिर आरएनए वायरस हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट, डिपेंडिंग अपॉन द न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट. सो इट मे बी आइदर आरएनए वायरस और इट मे बी डीएनए वायरस. डीएनए वायरस है तो इट्स ओके, डीएनए रिलीज होगा, वहाँ पर रेप्लिकेशन होगा, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन होगा. बट अगर आरएनए है तो आरएनए का रेप्लिकेशन कैसे होगा? तो आरएनए का पहले डीएनए बनता है बाय यूजिंग अ reverse transcriptase. Those enzymes or those viruses which are having RNA as a genetic material. So RNA is first converted into DNA by reverse transcriptase enzyme. Then replication of DNA takes place.
then again transcription, then translation. Translation में जो proteins बनते हैं they are known as early proteins and then the modification. Okay, and then lastly viral particles they are made, they are assembled, and then there is a release of that virus which is ready to infect another cell. There are two type of viruses. Antiviral drugs, yeah, these are the drugs which are active against the virus. They will eradicate the virus. They are non-selective in nature and they can cause adverse effect to the host cell also. इससे antibacterial drug होता है. They are selective in nature because in the bacterial cell and the human cell there is a difference in the cell wall, difference in the enzymes, difference in the replication process, transcription, translation. मतलब बैक्टीरियल सेल में ह्यूमन सेल में कुछ ना कुछ डिफरेंस है, तभी जाके एंटीबैक्टीरियल ड्रग दे कैन एक्ट सिलेक्टिवली ऑन द बैक्टीरियल सेल, है ना. जैसे एंटी कैंसर ड्रग दे आर नॉन सिलेक्टिव, वैसे ही एंटीवायरल ड्रग भी है नॉन सिलेक्टिव. बिकॉज क्या कि वायरस इज अ इंट्रासेलुलर पैरासाइट. वायरस आपके सेल के अंदर आके आप ही के सेल के मेटाबोलाइट्स यूज करेगा, आप ही के सेल के कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन लिपिड्स यूज करेगा, आप ही के सेल के एंजाइम्स यूज करेगा और रेप्लिकेशन करेगा, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और multiplication करेगा. That's why so they are non-selective in nature and they can also affect the host cell. Different targets for antiviral drugs may be any of the above. Targets for antiviral drug मतलब क्या, antiviral drug क्या क्या कर सकते हैं. So antiviral drug may prevent the attachment of virus to the host cell. It may, है ना, it may prevent the uncoating also. These are the targets. Then it may inhibit the replication. It may also inhibit the replication, transcription, translation. They may inhibit the synthesis of viral protein. They may prevent the release of matured virus. These are the targets. ये सब क्या है, targets है. These are the targets for antiviral drugs. Right? Antiviral drug may act on any of the above steps or multiple of the above steps. There are two type of viruses, DNA virus and RNA virus. Majorly, है ना, मेजॉरिटी डिफरेंस क्या है उसमें, एक में जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है, एक में आरएनए होता है. तो डीएनए वायरस डिपेंड्स ऑन द होस्ट सेल एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज फॉर द सिंथेसिस ऑफ एमआरएनए फ्रॉम डीएनए. बट जो आरएनए वायरस होता है, डीएनए वायरस डिपेंड्स ऑन द होस्ट सेल एंजाइम एमआरएनए पॉलीमरेज टू कन्वर्ट DNA to mRNA. Now, if the RNA is there, if virus is RNA virus, मतलब virus में अगर RNA genetic material है, if the virus is the RNA virus, right? So have their own mRNA polymerase for synthesis of mRNA. तो जैसे reverse transcriptase होता है, reverse transcriptase, right? RNA enzyme में if they have their own mRNA polymerase enzyme, DNA virus में they will utilize a host cell mRNA polymerase. Now you can see the different shapes of different viruses. यहाँ पे हेलिकल शेप का वायरस है नोन एज टोपेको मोसाइक वायरस, है ना. तो यहाँ पे देखो आरएनए वायरस होता है, जेनेटिक मटेरियल आरएनए इसका. देन पॉलीहाइड्रल शेप का एडेनो वायरस होता है, स्पेरिकल शेप का इन्फ्लुएंजा वायरस. स्पेरिकल शेप जैसे ये कोरोना वायरस भी ऐसा ही था, तो लाइक लुक लाइक अ कोरोना वायरस. दीज आर नोन एज अ क्राउन्स, दैट्स व्हाई. एंड दिस इज नोन एज अ बैक्टीरियोफेज. What is bacteriophage? When a virus will attack to a bacteria, it is a bacteriophage or simply a phage. Now, RNA virus or also known as retrovirus, for example, HIV, human immunodeficiency virus, so responsible for the AIDS. It will have a reverse transcriptase enzyme. जो AIDS का वायरस होता है, HIV वायरस जो होता है, वो एक RNA वायरस होता है, तो उसमें क्या है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज नाम का एंजाइम, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज नाम का, बिकॉज उसका जेनेटिक मटेरियल ही आरएनए है, तो आरएनए से डीएनए कैसे बने, फॉर दैट रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन इज. नॉर्मल ट्रांसक्रिप्शन इज फ्रॉम डीएनए टू आरएनए, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन इज आरएनए टू डीएनए. रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर द replication. So from RNA, DNA is made and then DNA is replicated. First of all, immature viral particles are formed. They become mature with the help of enzyme known as a protease. पहले तो सबसे बनेगा डीएनए बनेगा, डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, उसके बाद में आरएनए बनेगा, एमआरएनए, उसके बाद में प्रोटीन सिंथेसिस होगा. ठीक है.
Now for protein synthesis, that is the primary transcript needs some modification by the enzyme protease. Now reverse transcriptase and protease, they are again a target for anti-HIV drug. Examples of DNA virus में कौन से देख लो, herpes simplex, varicella zoster, smallpox, hepatitis B, human cytomegalovirus. RNA virus के example देख लो, rabies virus, rubella, measles, dengue virus, yellow fever, polymyelitis and HIV and influenza virus. They are the RNA virus. ठीक है. So what are the different targets for drugs? Different targets for antiviral drug. Targets क्या है antiviral drug के? These are the targets. तो normally क्या होता है? This is the virus. ये आपका वायरस है. It will get, ये आपका host cell है. This is your host cell. So virus will attach to a host cell. So that it will penetrate into host cell. After that it will uncode and release the genetic material. After that there is a synthesis of early protein. मतलब जो enzymes वगैरह लगते हैं वो synthesis होगा. उसके बाद में DNA का replication होगा, RNA बनेगा, उसके बाद में प्रोटीन बनेगा, उसके बाद में वो प्रोटीन प्रोसेस हो गए, पैकिंग करेंगे, बाद में फिर से वायरस वहाँ पे रिलीज हो जाएगा, रेडी फॉर टू इन्फेक्ट द अनदर सेल. अभी देखो, some drug will prevent the attachment of this virus to the host cell. So these are nothing but the enfovironide, miraviroc, docosanol. Docosanol क्या है? It is a alcohol. ये क्या होगा? Docosanol is a alcohol obtained from breast milk. Docosanol. Then palivizumab, docosanol, miraviroc, enfovironide. They will prevent the entry of or attachment of virus to the host cell. आफ्टर दैट वायरस अटैच हो गया तो पेनिट्रेट होकर के अनकोटिंग करेगा, मतलब उसका जेनेटिक मटेरियल रिलीज करेगा. दिस अनकोटिंग इज प्रिवेंटेड बाय अमेंटेडिन एंड रिमांटेडिन. रिमांटेडिन ये क्या है? अमेंटेडिन, रिमांटेडिन इज ओरिजिनली एंटीवायरल ड्रग, बट अमेंटेडिन इज आल्सो यूज्ड इन द पार्किंसोनिज्म. There is a dopamine releaser. Amantadine is also dopamine releaser, so used in the Parkinsonism, and it is short acting. और रिमांटेडिन क्या है? इज लॉन्गर एक्टिंग. अनकोटिंग होने के बाद में अर्ली प्रोटीन सिंथेसिस एंजाइम सिंथेसिस करेगा, दैट इज इनहिबिटेड बाय फॉर्मीवायरस एंड एंटीवायरल ड्रग. नाउ न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस, डीएनए आरएनए बनेगा, तो द डीएनए आरएनए जो बनता है वो इनहिबिट करेंगे कौन? तो एंटी मेटाबोलाइट्स और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर, nucleotide reverse transcriptase, non-nucleotide reverse transcriptase inhibitor. So antimetabolites and RTIs, they will inhibit the synthesis of nucleic acid and RNA. Late protein synthesis, that will be inhibited by protease enzyme. Protease का एक important role होता है to process the proteins, to process the translates. Now बाद में जैसे है ना, जैसे बैक्टोफेज में क्या होता है? कैप्सिड होता है एंड टेल होता है. तो टेल का जो प्रोटीन अलग है, कैप्सिड का प्रोटीन अलग है, जेनेटिक मटेरियल अलग है. तो जेनेटिक मटेरियल अलग सिंथेसिस होता है, वो कैप्सिड जो प्रोटीन है, कैप्सिड के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो अलग बनेगा. उसके बाद में उसका है ना एनवेलपिंग होगा, बाद में अटैचमेंट होगा टेल का. दैट इज नोन एज अ पैकेजिंग. दैट पैकेजिंग इज इनहिबिटेड बाय रिफॉर्मेशन. पैकेजिंग इज इनहिबिटेड बाय रिफॉर्मेशन, राइट. नाउ रिलीज जो है, फॉर द रिलीज ऑफ वायरस, for the release of matured virus from the cell, so virus needs one enzyme known as neuraminidase. So neuraminidase inhibitor has developed as an antiviral drug. They will prevent the release of virus. तो वही सेम चीज़ है कि वो यहाँ पे सेम थिंग. तो वायरस will attach to a host cell. This is known as a capsid, this is known as a tail. After attachment, it will go into the cell, the penetration, so that there is a uncoating. जो जेनेटिक मटेरियल होता है कैप्सिड के अंदर वो रिलीज हो जाएगा. आफ्टर दैट डीएनए विल बी रेप्लिकेटेड, डीएनए आरएनए, तो सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड. आफ्टर दैट एमआरएनए से बनेगा प्रोटीन्स, है ना, प्रोटीन सिंथेसिस. आफ्टर दैट ये जो प्रोटीन बनते हैं उसमें तो होता है अर्ली प्रोटीन, लेट प्रोटीन, ना. अर्ली प्रोटीन मतलब एंजाइम वगैरह जो होता है वो, एंड लेट प्रोटीन मतलब क्या? वायरल पार्टिकल का असेंबली. जैसे कैप्सिड अलग बनेगा,
कैप्सिड है, टेल है, टेल आना पड़ेगा। इसके बाद में ये जेनेटिक मतलब जो इसमें एनवेलप में एनक्लोज किया जाएगा एंड देन इट विल बी रिलीज। फॉर रिलीज न्यूरामिडेज इज द एंजाइम रिक्वायर्ड। So some drug will prevent the attachment of virus to the cell. That is the enprovironide, miravirus, pali and palicivizumab, then also docosanol. Then some drug will prevent the uncoating, that is amantadine, and rimantadine. So they are also antiviral drug. Amantadine is also used in the Parkinsonism. Dopamine releaser होता है. Amantadine is short acting. Rimantadine is longer acting. DNA polymerase inhibitors और simply antimetabolites, उसमें तो आता है न्यूक्लियोटाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर एंड नॉन न्यूक्लियोटाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर। देन एक आपका टारगेट है, अदरवाइज जो प्रोटीन बनेगा उसको आप इनहिबिट कर सकते हो। तो प्रोटीएज इनहिबिटर दे हैव डेवलप्ड एज एंटीवायरल ड्रग, दे विल प्रिवेंट द प्रोटीन सिंथेसिस और मैचुरेशन ऑफ प्रोटीन। देन assembling is inhibited by rifampin and release is inhibited by neuraminidase inhibitor. So we have seen the classification yesterday. Again, I would like to explain you in short. Okay. पहला क्लास क्या है? नॉन रिट्रोवायरल एंटीवायरल ड्रग। तो रिट्रोवायरस में नहीं, अदर जो बाकी वायरस है उसमें, तो नॉन रिट्रोवायरल एंटीवायरल ड्रग। तो पहला क्लास है एंटी हार्पेस वायरस। तो हार्पेस सिंप्लेक्स वायरस जो होता है उसके कारण इन्फेक्शन होता है, जैसे है ना, जैसे फॉर एग्जांपल नागिन वगैरह बोलते हैं, तो हार्पेस सिंप्लेक्स की वजह से बहुत सारा इन्फेक्शन होता है। माउथ अल्सर इज आल्सो बिकॉज ऑफ द हार्पेस सिंप्लेक्स, ठीक है, लिप अल्सर सारा। तो एंटी हार्पेस सिंप्लेक्स वायरस, तो आइडोक्सियूरिडीन, ट्राइफ्लोरिडीन, आइडोक्सियूरिडीन, ट्राइफ्लोरिडीन, एसाइक्लोविर, वैनसाइक्लोविर, गैनसाइक्लोविर, सिडोपोविर and foscarnet. These are the drugs used against the herpes virus. Some are the anti-influenza virus. So they are active against the influenza virus. It's amantadine, rimantadine, oseltamivir, and peramivir. So oseltamivir is useful in the H1N1. That is known as a H1N1 is known as a swine flu virus, and it is a drug of choice used in the treatment of swine flu. Also, it is a drug of choice in the treatment of bird flu. Oseltamivir. Drugs used in the viral hepatitis for hepatitis B. हेपेटाइटिस से तीन टाइप होते हैं, हेपेटाइटिस ए बी सी। हेपेटाइटिस बी एंड सी ये वायरस की वजह से होता है, वायरल हेपेटाइटिस बोलते हैं उसको। तो हेपेटाइटिस बी के अगेंस्ट है लैमिउडिन, एंटाकाविर, एडोपोविर, डिपिओक्सिल, टेनोफोविर एंड टेल्बिउडिन। हेपेटाइटिस सी के अगेंस्ट में कौन है? रिबावायरिन, इंटरफेरॉन अल्फा, सोफोस्बुविर, देन सिमाप्रिविर, डेकाल्टाविर, डेडिपाविर एंड वेलपटाविर। दीज आर द ड्रग्स। और अगेन यहाँ पे देखो एंटी रिट्रोवायरल ड्रग्स, तो ये रिट्रोवायरस के अगेंस्ट में यूज होते हैं एंटी रिट्रोवायरल ड्रग्स। इसमें पहला है नॉन, है ना, न्यूक्लियोटाइड, पहला है न्यूक्लियोटाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर, न्यूक्लियोटाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर। रिट्रोवायरल, एंटी रिट्रोवायरल क्यों बोलते हैं उनको? बिकॉज रिट्रोवायरस में क्या है कि रिट्रोवायरस एज आरएनए एज जेनेटिक मटेरियल, तो आरएनए जेनेटिक मटेरियल होने के कारण उसका रेप्लिकेशन नहीं हो सकता, तो दे हैव वन एंजाइम, है ना, तो एंजाइम होता है उसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, दे विल कन्वर्ट आरएनए टू डीएनए एंड देन रेप्लिकेशन विल टेक प्लेस। तो जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है उसके जो इनहिबिटर्स है, सो दे में बी कॉम्पिटिटिव एंड नॉन कॉम्पिटिटिव। तो न्यूक्लियोटाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर उनको ही बोलते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ना। तो कॉम्पिटिटिव होता है, दे इनहिबिट द रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज कॉम्पिटिटिवली। तो उन्होंने द कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर, they are known as competitive inhibitor. Zolodin, diadosin, staudin, lamivudin, abacavir, tenofovir। अभी न्यूक्लियोसाइड में तो होता है ना, न्यूक्लियोटाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर। न्यूक्लियोटाइड में तो न्यूक्लियोटाइड कितने, एक न्यूक्लियोसाइड होता है, एक न्यूक्लियोटाइड होता है, इसमें और भी दो क्लास है। दूसरा होता है आपका
नॉन न्यूक्लियोटाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर, ऑल दे आर द एंटी मेटाबोलाइट एंड ये क्या करेंगे, डीएनए का सिंथेसिस नहीं होने देंगे, द डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। तो नॉन न्यूक्लियोटाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर, तो इसको बोलते हैं नॉन कॉम्पिटिटिव है ना, नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर। इसमें आता है नेविरेपिन, डेलावेरिन है ना, इट्रावेरिन एंड है ना रिल्पावेरिन। नेक्स्ट आता है प्रोटीएज इनहिबिटर, दे विल प्रिवेंट द मैच्योरेशन ऑफ प्रोटीन और फॉर्मेशन ऑफ पार्टिकल्स। तो रिटोनाविर, एटाजनाविर, इंडिनाविर, नेल्पिनाविर, सेक्विनाविर एंड लोपिनाविर। देन फोर्थ क्लास आता है एंट्री इनहिबिटर, दे विल प्रिवेंट द एंट्री ऑफ वायरस इन द सेल, एग्जांपल इज एन्फोवायराटाइड। और फिफ्थ क्लास आता है आपका CCR5 रिसेप्टर इनहिबिटर, इसको बोलते हैं कीमोकाइन रिसेप्टर 5 इनहिबिटर। तो एग्जांपल इज मीरावायरल। क्वेश्चन आता है इन दोनों के ऊपर, ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है, और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के ऊपर तो बहुत बार आ चुका है। which one is a nucleotide reverse transcriptase inhibitor, which one is a non-nucleotide reverse transcriptase inhibitor, है ना। नाउ इंटीग्रेज इनहिबिटर, इंटीग्रेज क्या है कि जो वायरस है आपका रेट्रोवायरस, आफ्टर रिलीजिंग द RNA, DNA is made from reverse transcriptase and the DNA will mix up with your host DNA, known as integration. So integration inhibitor is nothing but the eltagravir and dolutegravir. So integrase inhibitor. So again, classification based upon the mechanism of action. Classification based upon the mechanism of action. Nucleic acid synthesis inhibitor कौन है आपका, जो है ना न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस इनहिबिटर में दोनों आएंगे, कौन से, न्यूक्लियोटाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंड नॉन न्यूक्लियोटाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो आइडोक्सियोलिन, एसाइक्लोविर, रिबाविरिन, ट्राइफ्लोविरिन एंड एजोडोथायमिडिन, ऑल दे आर द एंटी मेटाबोलाइट एंड दे आर नथिंग बट, इनमें जो बेस पेयर होता है वही होता है, और उसमें जो शुगर होता है उसमें 3' नहीं होता, दैट्स वाई ये जाके वहाँ पे बाइंड करते हैं और बाद में पॉलीमराइजेशन प्रिवेंट करते हैं। देन अटैचमेंट ऑफ ड्रग विच प्रिवेंट द अटैचमेंट और पेनिट्रेशन इनहिबिटर, अमांटाडिन, ज़नामोविर। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर लैम्यूडिन, इम्यूनो मॉडिफायर, इंटरफेरॉन गामा एंड मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। Interferon gamma globulins and monoclonal antibodies. You can see over here again once more the antiviral drugs, non-retroviral, ये non-retroviral है, तो antiviral, anti-herpes simplex virus against the herpes virus, anti-herpes viral drug, तो आइडोक्सियोलिन, ट्राइफ्लोविरिन, एसाइक्लोविर, वेलासाइक्लोविर, रामसाइक्लोविर, गैनसाइक्लोविर, वेलगैनसाइक्लोविर, रिडोबोविर, फोस्कारनेट एंड फॉर्मिवेरासिन ना, फॉर्मिवेरासिन। याद कैसे रखना है इसको, जैसे बोला है सेन, नेट है ना, रिडीन एंड वीर है ना, सेन, नेट, रिडीन एंड वीर। तो सेन बोले तो फॉर्मिवेरासिन, फोस्कारनेट बोले तो फोस्कारनेट, एंड रिडीन बोले तो आइडोक्सियोलिन एंड ट्राइफ्लोविरिन आइडोक्सिन, एंड वीर बोले तो एसाइक्लोविर, वेलसाइक्लोविर, रामसाइक्लोविर, गैनसाइक्लोविर, वेलगैनसाइक्लोविर, दोनों का कॉम्बिनेशन है। देन सेकंड क्लास आता है एंटी इन्फ्लुएंजा वायरस, तो ये इन्फ्लुएंजा वायरस के अगेंस्ट में अमेंटाडिन, ओसल्टामाविर, रिमांटाडिन, ज़नामाविर। देन एंटी हेपेटाइटिस वायरस है ना, एंटी हेपेटाइटिस वायरस और नॉन सेलेक्टिव एंटीवायरल ड्रग, इसमें फॉर हेपेटाइटिस बी लैम्यूडिन, एडोपोविर, डिपिऑक्सिल, टेनोप्रिल, एंड फॉर हेपेटाइटिस सी आपका आएगा रिबावायरिन एंड इंटरफेरॉन अल्फा। तो आपका जो अमिताभ बच्चन है, बिग बी है, बिग बी वाज सफरिंग फ्रॉम हेपेटाइटिस सी, बिग बी वाज सफरिंग फ्रॉम हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस सी होता है। नाउ रिट्रोवायरल ड्रग्स, एंटी रिट्रोवायरल ड्रग्स, तो इसमें न्यूक्लियोटाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर, इनको ही बोलते हैं अपन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। इसमें आता है ज़िडोवुडिन, डायडेनोसिन, स्टाउडिन, लैम्यूडिन, अबिकाविर,
emtricitabine and tenofovir. Sinbindin ऐसा याद रखना, sinbindinvir, sinbindinvir, diadenosin, emtricitabine, sinbin, उडिन मतलब जिडोउडिन, स्टाउडिन, लैमिउडिन एंड फिर मतलब अबागाविर, यहाँ पे एक ही अबागाविर एंड टेनोफिर. Non-nucleotide reverse transcription inhibitor, they are known as non-competitive inhibitor of DNA polymerase. Nevirapine, epavirenz and delavirdine. Protease inhibitor, कौन है? They will prevent the maturation of proteins in the virus. तो viral particle बनेगा ही नहीं. तो ये आपके रिटोनाविर, एटाजनाविर, इंडिनाविर, नेल्फिनाविर, सैक्विनाविर, एम्प्रिनाविर एंड लोपिनाविर. तो इसका ट्रिक्स वगैरह देखना है आपको, तो मैंने एक मेरा क्लासिफिकेशन का वीडियो सीरीज है, उसमें ट्रिक्स भी बोला है मैंने, अभी मुझे याद नहीं आ. देन अगेन एंट्री इनहिबिटर में आता है एनपोवायरेट, क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है इसके ऊपर. So they will prevent the entry of virus into the cell. CCR5, CCR4 receptor inhibitor, वो the chemokine receptor inhibitor. So मेरा वायरस आता है इंटीग्रेज इनहिबिटर में आता है रेलटैग्राविर, ठीक है, ये ऑलरेडी से. देखो पहला है आपका इंडिविजुअल एंटी हर्पेज सिम्प्लेक्स वायरस, पहला है आपका एसाइक्लोविर. इसके ऊपर क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है लास्ट ईयर के जीपैट में. व्हाट इज द एक्टिव मेटाबोलाइट ऑफ एसाइक्लोविर? तो क्वेश्चन आते हैं. तो इफेक्टिव अगेंस्ट द हर्पेज सिम्प्लेक्स वायरस टाइप 1 एंड टाइप 2, also effective against the varicella zoster and Epstein-Barr virus, but is not effective against the cytomegalovirus. है ना, किसके अगेंस्ट इफेक्टिव है? हेपेटाइटिस है ना, हर्पेज सिम्प्लेक्स 1, हर्पेज सिम्प्लेक्स 2, varicella zoster, then Epstein-Barr virus, not effective against the cytomegalovirus. मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? ये सब क्या है? एंटी मेटाबोलाइट, ऑल दे आर द एंटी मेटाबोलाइट. Acyclovir after entry into infected cell gets converted into acyclovir triphosphate. ये ट्राइफॉस्फेट कैसे बनता है? So it is made by two enzymes. First one is a virus based kinase enzyme, thymidine kinase. So virus based thymidine kinase convert acyclovir into acyclovir monophosphate, and then host kinase will convert acyclovir monophosphate into acyclovir diphosphate and triphosphate. Now triphosphate acyclovir triphosphate that will bind to that will get entry into the growing nucleotide chain, and as there is no 3-OH at a pentose sugar in this, so that's why chain termination, which prevent the DNA synthesis by inhibiting the DNA polymerase and causing the DNA chain termination. Virus will die. Adverse drug reaction क्या है इनके? Nausea, vomiting, diarrhea, plus topically when used it can cause burning and irritation. When given IV can cause renal and neurotoxicity, which is a uncommon. Uses देखो हेपेटाइट है ना, यूजेस क्या है? हर्पेज सिम्प्लेक्स वायरस इन्फेक्शन टाइप 1, इन्फेक्शन ऑफ माउथ, फेस, स्किन, ब्रेन. टाइप 2 में हर्पेज सिम्प्लेक्स टाइप 2 मोस्टली कॉजेज द इन्फेक्शन ऑफ जेनिटल, रेक्टम, स्किन, हैंड्स और मेनिंजाइटिस. तो बोथ में इसका यूज होता है. हेपेटाइटिस है ना, हर्पेज सिम्प्लेक्स वायरस 1 एंड एज वेल एज 2. इंट्रावेनस एसाइक्लोविर इज अ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर herpes simplex virus encephalitis. Acyclovir is a drug of choice for herpes simplex virus encephalitis. Herpes simplex virus keratoconjunctivitis as a eye drop, इसका eye drop भी आता है. Decreases the severity of disease in case of herpes zoster, also used in the chickenpox. Chickenpox is caused by varicella zoster.
वेरिसेला जोस्टर नाम का जो वायरस है वो करता है, चिकन बॉक्स करता है। टू रिड्यूस द ड्यूरेशन एंड सीवियरिटी ऑफ इलनेस, वेलोसाइक्लोविर इज अ प्रोडक्ट ऑफ एसाइक्लोविर, इसके ऊपर भी क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है। वेलोसाइक्लोविर इज अ प्रोडक्ट ऑफ एसाइक्लोविर, famciclovir is a product of penicillin. Both are used in the herpes simplex virus and varicella zoster infection. Ganciclovir is effective against the herpes virus, particularly cytomegalovirus. ये cytomegalovirus के ऊपर भी एक्टिव है। एडवर्स ड्रग रिएक्शन इनका क्या होता है ना, माइलो सप्रेशन, मतलब क्या है, बोन मैरो सप्रेशन, माइलो सप्रेशन, एंड गोनेटोक्सिटी, आल्सो नेफ्रोटॉक्सिटी, सभी क्या है, नेफ्रोटॉक्सिटी, किडनी का टॉक्सिक, यूज्ड इन द इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट ऑफ साइटोमेगलोवायरस इन्फेक्शन है अपर रेटिना। तो ये हो गया साइक्लोविर, मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है एंड एडवर्स इफेक्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो मैकेनिज्म क्या है ए साइक्लोविर का। Acyclovir upon entry into cell, viral kinase will convert acyclovir into acyclovir triphosphate. You know, host kinase will convert acyclovir monophosphate to acyclovir diphosphate and triphosphate. So, which inhibit the DNA polymerase and also causes the chain termination. So next the idoxuridine, effective in the DNA viruses, viral DNA synthesis inhibitor होता है, ये टॉपिकली यूज किया जाता है, यूज फॉर सिस्टमिक है ना, टॉक्सिक फॉर सिस्टमिक यूज, यूज्ड इन द herpes simplex keratitis. Trifluoridine is also used topically for herpes simplex eye infection, idoxuridine and trifluoridine. नेक्स्ट होता है आपका फॉस्कारनेट, यूज टू ट्रीट द साइटोमेगलोवायरस rhinitis alternative to the ganciclovir. Homiviracin alternative to the other drug when they are ineffective in case of cytomegalovirus CMV rhinitis. नेक्स्ट ड्रग है सिटोप्रोविर, ऑल दे है ना, ये सभी ड्रग क्या है, ये एंटी मेटाबोलाइट है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीवायरल ड्रग सिटोप्रोविर act by inhibiting the DNA synthesis of virus, effective against the herpes simplex virus, varicella zoster, cytomegalovirus, Epstein-Barr virus, human papilloma virus, है ना, and adenovirus, used in the treatment of prevention of CMV rhinitis and in a HIV patient. Topically used in the HIV, HPV, human papilloma virus skin infection. एंटी इन्फ्लुएंजा ड्रग देखो, पहला है आपका अमेंटेडिन, तो उसका छोटा भाई रिमांटेडिन। तो अमेंटेडिन क्या है, इट इज अ शॉर्ट एक्टिंग, रिमांटेडिन इज अ लॉन्गर एक्टिंग, acts by inhibiting the replication of influenza A virus. Adverse reaction includes आपका common acidosia, vomiting, diarrhea, insomnia, ankle edema. Rimatriptan is a longer acting. इसकी use क्या है, used for prophylaxis and upper high risk patient in the treatment of influenza, prevention of influenza infection. Also used in the Parkinson as amantadine is a dopamine releaser. डोपामाइन को रिलीज करता है तो पार्किंसनिज्म में यूज किया जाता है। ओसल्टामाविर एंड ज़नामाविर, तो दे ड्रग ओसल्टामाविर एंड ज़नामाविर, they act by inhibiting the viral replication or by inhibiting the enzyme neuraminidase. Activity is essential for the release of dotavirine. Neuraminidase है ना, मतलब ओसल्टामाविर इनहिबिट द वायरल रेप्लिकेशन एंड ज़नामाविर इनहिबिट द न्यूरामिडेज, है ना। ओसल्टामाविर का एक ब्रांड नेम होता है टेमीफ्लू, ओसल्टामाविर का एक ब्रांड नेम होता है टेमीफ्लू। तो इट इज अ ड्रग यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ है ना बर्ड फ्लू एंड स्वाइन फ्लू, H1N1 रिएक्शन, H1N1 वायरस, H1N5 वायरस, ठीक है। एंड अदर इन्फ्लुएंजा वायरस, ज़नामाविर is given by inhalation
कैन कॉज रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस. डोकोसेनॉल जो ड्रग है आपका, डोकोसेनॉल इनहिबिट द वायरल एंट्री इनटू होस्ट सेल एंड सप्रेस द वायरल एप्लीकेशन. अब ये कहाँ से आया? डोकोसेनॉल इट इज अल्कोहल, अल्कोहल isolated from breast milk. Obtained from breast milk. क्या है ये? अल्कोहल है. अदर एंटीवायरल ड्रग रिबाविरिन, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीवायरल ड्रग होता है, इफेक्टिव अगेंस्ट द मेन डीएनए एंड आरएनए वायरसेस लाइक इन्फ्लुएंजा ए वायरस, रेस्पिरेटरी सिस्ट, है ना, सिंसिस्टनल वायरस, used in the treatment of respiratory syncytial virus bronchitis in children, prophylaxis of influenza, measles in case of immunocompromised patient. तो आपके हेपेटाइटिस सी वायरस की इन्फेक्शन में यहाँ पे आपका इंटरफेरॉन यूज करते हैं. इंटरफेरॉन क्या है? इसके ऊपर क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है. इंटरफेरॉन इज अ antibody against the virus. What is interferon? Antibody against the virus. तो अगर आपका बैक्टीरियल इन्फेक्शन है ना, अगर आपको इन्फेक्शन होता है बैक्टीरिया का, यू हैव बैक्टीरियल इन्फेक्शन, तो अगेंस्ट दैट इन्फेक्शन your body will synthesize the antibodies which are known as the immunoglobulins. Immunoglobulins, this is immunoglobulin M. But against the virus, so this is known as the interferon. So antibody which is in the cytokinins produced against the viral infection by the host cell. इसके ऊपर क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है. इन ह्यूमंस देयर आर 3 टाइप ऑफ इंटरफेरॉन, है ना. एक होता है आपका अल्फा ह्यूमन, है ना, अल्फा इंटरफेरॉन जो 166 अमीनो एसिड मोलिकुलर वेट होता है, इसका 16,000 to 26,000 डेल्टन. दूसरा होता है बीटा एंड गामा इंटरफेरॉन, तो मोलिकुलर वेट अराउंड 20 to 25,000 डेल्टन, 146 अमीनो एसिड. दे इनहिबिट द मल्टीप्लिकेशन of many RNA and DNA virus, inhibition of several steps of viral replication like penetration, uncoating, synthesis of mRNA and protein. So they has adverse effect of neurotoxicity, alopecia, arthralgia, headache, hypotension, arrhythmia and bone marrow suppression. उनका यूज कहाँ पे है? They are used in the hepatitis B, C, है ना, hepatitis B and C virus infection, Kaposi sarcoma in HIV patient, genital warts due to human papilloma virus, ना, hairy cell leukemia, then hepatitis herpes simplex virus, basal zoster cytomegalovirus, immunocompromised patient, interferon alpha is used internally for prophylaxis of rhinovirus cold. Anti-hepatitis antiviral drug, anti-hepatitis antiviral drugs, anti-hepatitis antiviral drugs. So hepatitis B virus and hepatitis C virus. hepatitis B virus क्या है? DNA virus है, but hepatitis C virus is a RNA virus. So hepatitis B DNA virus है, hepatitis C is a RNA virus. Virus will not integrate with the host genome and will not cause non-curable infection, but they will can cause chronic hepatitis. ये वायरस क्या है? ये कोई इन्फेक्शन वगैरह नहीं करते, बट ये क्या करते हैं? हेपेटाइटिस करते हैं, inflammation of liver cell. Hepatitis B cannot be eradicated from the body, so aim should be suppression of virus and prevent the damage to the liver cell. So lamivudine इसमें यूज करते हैं, lamivudine which is a nucleoside analog, then entecavir guanosine nucleotide analog, currently most active against the hepatitis B virus and first line agent for the hepatitis B. Adipavir, tenofovir,
टेल्विओडिन एंड आर अदर ड्रग्स। और हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी क्या है, आरएनए वायरस होता है। रिबाविरिन, प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड एनालॉग, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी माइक्रोबियल ड्रग एक्टिव अगेंस्ट द हेपेटाइटिस सी वायरस, इन्फ्लुएंजा ए एंड बी। इंटरफेरॉन अल्फा भी इसमें यूज कर सकते हैं। इंटरफेरॉन अल्फा एंटीवायरल एंटीबॉडी, लो मोलिकुलर वेट, ग्लाइकोप्रोटीन साइटोकाइन प्रोड्यूस्ड बाय वो सेल अगेंस्ट द वायरल इन्फेक्शन। Interferon have non-specific antiviral as well as other complex effect on immunity and cell growth. New directly acting drug on hepatitis C. They target a specific non-structural viral protein. They have an important role in the replication of hepatitis C virus in the liver. They are used in combination with the alpha interferon. यहाँ पे NS5B polymerase inhibitor, soposbuvir, ENS3 protease inhibitor, cimeprevir, ENS5A inhibitor, deltagravir, ledipsavir, valproxavir, decaltavir, ledipsavir, valproxavir. These are the drugs. So you can see the treatment of viral hepatitis. तो वायरल हेपेटाइटिस का ट्रीटमेंट, एक तो एक्यूट हेपेटाइटिस में, इसमें भी आप एक्यूट हेपेटाइटिस में भी बिकॉज ऑफ द हेपेटाइटिस बी वायरस और हेपेटाइटिस सी वायरस। हेपेटाइटिस बी वायरस में सिम्टोमेटिक थेरेपी एंड नो एंटीवायरल ड्रग इज रिक्वायर्ड। तो ये डीएनए वायरस होता है वो क्लियर होता है ना। हेपेटाइटिस सी वायरस, तो इसमें पेगाइलेटेड, पेग इंटरफेरॉन मतलब पेगाइलेटेड इंटरफेरॉन एंड रिबाविरिन। क्रॉनिक हेपेटाइटिस में है ना, अगेन बी में आता है आपका इंटेकाविर, द ड्रग ऑफ चॉइस है ना। एंड इस हेपेटाइटिस सी में पेग इंटरफेरॉन प्लस रिबाविरिन, पेगाइलेटेड इंटरफेरॉन प्लस रिबाविरिन। हेपेटाइटिस बी में ओरली यूज ड्रग कौन सा है, क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी ओरली यूज है लैम्यूडिन, अडोपोविर, टेनोपोविर। सबक्यूटेनियसली आपको इंटरफेरॉन टू अल्फा बी एंड पेगाइलेटेड इंटरफेरॉन अल्फा बी, पेगाइलेटेड इंटरफेरॉन अल्फा टू ए। So this is the part 1. Tomorrow we'll see the drugs used in the HIV. तो उससे पहले ये 2 स्लाइड बचा है वो फिनिश कर लेंगे। एग्जाम्पल्स ऑफ ड्रग अफेक्टिंग ऑन स्पेसिफिक स्टेप्स ऑफ वायरल रेप्लिकेशन। तो ड्रग पर्टिकुलर स्टेप के लिए कहाँ पे एक्ट होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल तो अनकोटिंग is affected by amantadine and rimantadine. Transcription is affected by interferon. Translation of viral protein is affected by vomivirus and interferon. DNA replication, DNA RNA replication, जितने भी आपके एंटी मेटाबोलाइट ड्रग है, असाइक्लोविर, सिडोपोविर, फेमसाइक्लोविर, गैनसाइक्लोविर, फॉस्कार्नेट, हाइड्रोक्सीविरिन, रिबाविरिन है ना, सोरिवुडिन। देन असेंबलिंग एंड बर्निंग ऑन एंड रिलीज, इंटरफेरॉन, ओसल्टामिर एंड ज़नामोविर। यहाँ पे देखो डिफरेंट वायरस एंड दे आर डिसीज कॉज्ड। इससे फॉर एग्जांपल डीएनए वायरस कौन है ना, पॉक्स वायरस, तो ये करता है स्मॉल पॉक्स। herpes वायरस करता है चिकन पॉक्स। सिंजल्स, सिंजल्स को बोलते हैं नागिन मार्टिन। देन ग्लैंडुलम फीवर। एडिनो वायरस करता है सोर थ्रोट एंड कंजक्टिवाइटिस। पैपिलोमा वायरस करता है वार्ड्स। पार्वो वायरस करता है आपका कैनाइन डिस्टेम्पर है ना, मतलब पार्वो वायरस इज रेबीज वायरस, कैनाइन डिस्टेम्पर। जो कुत्ते होता है वो पागल कर देगा वो। आरएनए वायरस में ऑर्थोमॉक्सी वायरस है ना, तो इन्फ्लुएंजा करता है। परमन वायरस, मीजल्स, मम्प्स एंड रेबीज। रैप्डो वायरस, कोल्ड्स, मेनिंजाइटिस। पिकर वायरस, पोलियोमाइलिटिस। रेट्रो वायरस, एड्स है ना। एडिनो वायरस मेनिंजाइटिस करता है ना। बुन्ना वायरस करता है इंसेफेलाइटिस, हेमोरेजिक फीवर। दीज आर ना। तो इबो वायरस जो है वो इबोला करता है आपको। इबोला वायरस मतलब फिलो वायरस।
डायरिया करता है रिवो वायरस, हेपेटाइटिस करता है एपेंडा वायरस. These are the virus which causes the disease, and tomorrow we'll see the drugs used in the HIV AIDS. HIV के ड्रग्स कल देखेंगे अपन, एंड कल उसका केमिस्ट्री भी देखेंगे.